In this video, let's talk about why are we becoming less happy? Yeah, are you wondering why? Then stay on right until the end. Hi, I'm Asta Tatia, daughter of two rock solid pillars, mother to a lovely daughter, wife of a humor king, an engineer, MBA corporate executive turned anchor person, now a happiness coach, helping leaders become the most sought after leaders by having deep connects and meaningful relationships in their organizations. If you find this video meaningful, please hit the like button, subscribe to my YouTube channel. So the very first thing, basic thing, uh, आपके ब्रेन के बारे में, एंड दैट इज कि कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ. वो लिमिटिंग बिलीव्स मुझे गवर्न कर रहे हैं. सारे बिलीव्स हैं जो मुझे गवर्न कर रहे हैं, पर अभी मैं बात कर रही हूँ लिमिटिंग बिलीव्स की, क्योंकि हम अनहैप्पी क्यों हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, राइट? तो लिमिटिंग बिलीव्स कैसे नजर आते हैं? आई एम सपोज टू बी लाइक दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस, आई शुड बी डूइंग दिस, I must behave in this manner. तो जितने भी शुड्स हैं, मस्ट हैं, आई हैव टू काइंड ऑफ जो चीजें हैं, ये सारे लिमिट कर रहे हैं मुझे, क्योंकि फिर मैं जो एक्चुअली होना चाहती हूँ या जो हूँ वो ना हो करके कोई और बन रही हूँ, और वही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बाहर के लोगों से भी, दूसरे लोगों से, दूसरी सिचुएशन से. वो भी सपोज टू होनी चाहिए, must be like this, should be this way. That's what is happening. So all of that which is coming from my beliefs is governing my behavior, my actions, and ultimately my results. अब जो limiting beliefs से behavior आ रहे हैं मेरे, जो मेरे results आ रहे हैं, वो desirable नहीं होते हैं, right? Because when the moment I am away from who I really am and I'm living into that world of this is how I'm supposed to be, or this is how the world is supposed to be, then obviously there's a challenge. Now the bigger thing is we want to know why. Yeah, because we feel, because of the beliefs that we have, I feel that this is how the other person should behave. And by the way, all these beliefs, where do they come from? They come from my childhood conditioning, whatever I've seen, picked up from my experiences. I feel नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, और अगर ये ऐसे ही होना चाहिए और नहीं हो रहा है, मुझे लगता है सामने वाले को ऐसे बिहेव करना चाहिए, मेरे स्पाउस को ऐसे बिहेव करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को समझना चाहिए. पर अगर वो नहीं करते हैं, then the question that I ask myself is why, right? And the moment हम why पूछते हैं, we get into our own trap. Because why जानने के लिए, why का मुझे नहीं पता ना, because none of that is in my control. My parents, my spouse, kids, relatives, family, friends, colleagues, clients, anybody outside, even the situations, what's happening outside, none of it is in my control. But I want that answer. Why is he doing it? So, because the brain is a meaning making machine, I start to attach meaning to everything. हर वो चीज जो हो रही है उसके साथ I start attaching a meaning. I start attaching stories to it. I start creating stories. अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका मतलब वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, या शायद वो मुझे ट्रस्ट नहीं करता है इसलिए वो ऐसा कर रहा है. और ये स्टोरीज आ कहाँ से रही हैं? ये स्टोरीज आ रही हैं मेरे खुद के बिलीफ से. जैसा मैं मेरे बारे में सोचती हूँ, जैसा मैं लोगों के बारे में सोचती हूँ, वहां से वो स्टोरीज बन रही हैं, कुक हो रही हैं, और मैं लगी हुई हूँ. Are you able to see that in your life, that how we are making stories in every scenario, every instance? Because we are asking the wrong question to ourselves, which is why. Yeah. Why is it happening? Why me? Why is this person behaving like this? Why is this not happening? Right? Why are results not happening the way I want them? Why? And there's no answer to why. Why will only take you deep down into that disempowering emotion, which is what happens. And then we wonder why are we unhappy. तो जब ये सब हो रहा है,
whatever is not in my control, मैं उसका reason ढूंढने में लगी हुई हूँ, because I have attached my happiness to all of these people, to all of these situations, to all of these circumstances. तो अगर मैंने मेरी हैप्पीनेस उससे जोड़ दी है जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो मेरी हैप्पीनेस मेरे कंट्रोल में कैसे हो सकती है? देन आई कैन नॉट बी हैप्पी एट माय विल, देन आई एम हैप्पी और माय हैप्पीनेस इज देन एट द मर्सी ऑफ एवरीथिंग एल्स, एवरीबडी एल्स, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट दैट मिसिंग अवेयरनेस. ये सब हो रहा है, मैं जो आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको पता भी नहीं है ये सब हो रहा है. So the whole point is to bring in that awareness, that consciousness, that okay, this is how my brain works, this is how I operate from beliefs, and ऐसा ऐसा हो रहा है. अब ये हो तो रहा है. The second thing, do what's the choice that I'm making? पता चल गया, लेकिन अब इसका कुछ करना है या नहीं करना है? क्या कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं. Yeah, which is creating new beliefs and every moment making that choice. And when I say choice, it's not about 10 दिन मैंने कुछ कर लिया and I'm done, कुछ रिपेयर करना है जो मेरे साथ खराब है. No, it's about making that choice every day, हर दिन, हर moment, हर situation के अंदर. What am I choosing? Am I choosing to go with that same old patterns, limiting beliefs, and then get into that why and stories and all of that? Or do I choose to inculcate some new habits? I choose to create newer patterns which will serve me. So making that choice, and of course, there are tools, it needs work, and that work takes time. But the point is, पता चलने के बाद क्या मैं वो choice exercise करना चाहती हूँ? And if yes, then I need to do that work. Yeah. So the beauty is that I can choose when I want to be happy. I can really be happy whenever I want. The whole point is when all of this is happening subconsciously, you know, and we are comparing ourselves, we're looking for that happiness outside. वो सारे behaviors हैं, but उसके source पे ये है, which is the limiting beliefs, and then the whole deal around why is this happening? Are getting that answer to the question why. So when I'm consciously choosing to have different habits, when I consciously choose to ask how and what instead of why, that's where I start to get more in control. So I hope that gives you a perspective. आपको एक आइडिया मिला होगा कि क्यों हम अनहैप्पी हो रहे हैं. इट्स ऑल विद इन मी, मेरे हाथ में है, मैं खुद हूं उसके पीछे. Yeah. So if you've gotten an idea, please go ahead, reflect on that, and just understand that you have that choice. The whole point is, when do you start that work? Like right now in this moment, go ahead and start that work. Start by one small step at a time, but that choice is to be made by you. Yeah. If you found this meaningful, please hit the like button, subscribe to the channel. I will see you in the next video. Take care. Bye bye.